Diabetes is a global health challenge with significant implications for public health, healthcare systems, and individual well-being. It affects millions of people worldwide, and Pakistan has now become the first in the comparative prevalence in diabetes in the world, and we now stand ranked third largest population having diabetes. Preventing and managing diabetes complications is a critical aspect of diabetes care. Diabetes can affect multiple organs, leading to serious health issues, namely cardiovascular complications, neuropathy, nephropathy, retinopathy, and all these can be prevented or at least minimized by blood sugar and blood pressure control, lipid management, regular checkups, lifestyle and dietary changes, and medication. To talk more about preventing and managing the diabetic complications, I would like to invite to our stage our speaker for today, Dr. Nadeem Naseem. Dr. Nadeem is Head of Department, Diabetes, Endocrinology and Metabolism at Maiman Medical Institute Hospital. He is also served as consultant at Bakai Institute of Diabetic Endocrinology in Karachi. Dr. Nadeem, please take over the case. Assalamu alaikum, good afternoon, fellows. I'm Dr. Nadeem Naeem, currently working as Head of the Department, Diabetes and Endocrinology at Maiman Medical Institute Hospital, Karachi. Here's my speaker disclosure, and the learning objective of our today's session would be, first, to identify the link between diabetes and its complications, and second, to manage the patients with diabetes complications. These are just two objectives today. And my first question is a bit conflicting question, because I already got comment from our senior professor. Does anyone know at which rank we are in the diabetes prevalence? Fifth. Anyone? Number one. Good. Anyone? So first, so as far as comparative prevalence of diabetes is concerned, we are on number one. And about the study, this IDF data is based on a study that's called the National Diabetic Survey of Pakistan. I was a part of that study, and we can discuss that study after the session as well, about the quality of evidence and all these things. So currently, there are 33 million people living with diabetes in Pakistan. 3.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ हैं. 33 million people who are going to develop, number 1, stroke, number 2, myocardial infarction, number 3, blindness, and number 4, end-stage renal disease. I remember when I was doing my FCPS medicine, during that time, every third or fourth patient in our ward was actually suffering from chronic liver disease. That was back in 2010 and 11. Can anyone explain why in 2010 and 11 every third and fourth patient admitted in ward was suffering from chronic liver disease? Anyone? 2010-11 के अंदर आपके अपने वार्ड्स में हर चौथा बंदा CLD के साथ एडमिट होता था. Why so? High burden of Hep in the patient during 90s. So every fourth patient in our wards in future would be admitted with either myocardial infarction or stroke or end-stage renal disease or diabetic foot if we don't do anything now. So this is the time. That was the reason I have traveled that far from Karachi, a 2-hour flight, then a 4-hour zigzag road, just to discuss a single thing with you people. And it would not be a lecture at all, because I'm not a very good lecturer. So it would be an interactive session. I would be learning from you people and you would be learning from me. And the ultimate goal would be to strengthen the evidence-based medicine. And I can assure you one single thing. By the end of these 30-40 minutes, we would be saving a lot more lives than we currently are, because that's what we are meant to do. तो इन 40 मिनट के बाद हम में भी शायद 1000 जिंदगियां और बचा रहे होंगे. That's what I can promise to you. What about our future generation? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 33 मिलियन लोग शुगर के मरीज़ हैं. What about our kids? Okay, मुझे एक बात बताएं. From which age you people actually expect diabetes in kids? कोई भी? किस उम्र से आपको लगता है कि बच्चा टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप कर सकता है? I'm not talking about टाइप 1 डायबिटीज़. जी, कोई भी एक एज बता दें. किस उम्र के बच्चे को देख के आपको लगता है कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए टाइप 2 डायबिटीज़ की इन बच्चों के अंदर? No, not Moody, type 2 diabetes. 15, sir is saying 15. Anyone? 24, good. कोई और? जी सर. टाइप 2 डायबिटीज़ किस उम्र में आपको लगता है कि बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है? जस्ट एक आप अपना आइडिया दें. आप डॉक्टर हैं जी.
So teenagers. So someone is saying 24, someone is saying 15, and someone is saying teenagers. American Diabetic Association क्या कहती है? वो कहती है कि if your child is an Asian and he or she is overweight, you have to start screening of type 2 diabetes from the age of 10 years. And in my practice, I have seen kids 11 years, 13 years, 14 years, and 15 years of age who are developing type 2 diabetes, especially females who have developed polycystic ovarian syndrome. So this is not about us, this is about our future. अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम आगे भी कुछ नहीं कर सकेंगे. क्वेश्चन इज कि हमें करना क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अवर किड्स. हम अपने बच्चों के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं, हम सब सेंसिटिव होते हैं, आप सब भी सेंसिटिव हैं. मेरे बेटे को जो है वो क्या कहते हैं कंजक्टिवाइटिस हो गया, 3 आई सर्जन के पास भागा, हालांकि मुझे पता था कि कौन सा ड्रॉप देना है. सो वी आर वेरी मच कंसर्न विथ अवर किड्स. ईमानदारी से बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मना करते हैं, जिनके घर में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आती? सो अराउंड 25-30% ऑफ द पीपल. व्हाट अबाउट द 70%? डज एनीवन नो एक कोल्ड ड्रिंक में कितनी चीनी होती है? ओके, डज एनीवन नो एक 250 ml की कोल्ड ड्रिंक में कितनी चीनी है? हाउ मच शुगर इज इन अ 250 ml कोल्ड ड्रिंक? जी 12 चमचे. एक रोटी में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं? एक रोटी होती है ना, एक रोटी में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट हैं? 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट. और एक चमचे चीनी में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट हैं? 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट. वुड यू अलाउ योर 7 year, 8 year, 9 year और 10 year चाइल्ड टू हैव 12 चपातीस? क्या आप अपने 12 साल के बच्चे को 12 रोटियां खाना अलाउ करेंगे? वुड यू अलाउ दैट? ऑफ कोर्स नॉट. Then how you are allowing that same kid with same amount of carbohydrates in a 250 ml cold drink? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि टाइप 2 डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी के लिए एक वर्ड बोलें तो आप क्या बोलेंगे? अ सिंगल वर्ड. जी थोड़ा इसको बेहतर करें. जी हैव एनीवन हर्ड अ वर्ड मेटाबेसिटी? क्या कभी किसी ने सोचा है कि व्हाट इज मेटाबेसिटी? When your weight starts increasing, your insulin starts getting resistance. You develop impaired glucose tolerance, you develop diabetes, you develop hypertriglyceridemia, you develop increased LDL levels, then you develop myocardial infarction, then you develop stroke, and your life is like a living hell. And that's what metabesity is. और ये शुरू कहाँ से होती है? As sir was discussing, ये शुरू होती है यहाँ से, unhealthy eating habits and sedentary lifestyle. सो सिर्फ 2 चीज़ें. डू यू नो 1984 के अंदर एक सर्वे हुआ था और वही पाकिस्तानी वर दी 3rd हेल्दीएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया की 3rd हेल्दीएस्ट नेशन थे हम 1984. एंड नाउ इन 2021 व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? वी आर ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट एज फार एज टाइप 2 डायबिटीज प्रिविलेज इज कंसर्न. व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट? ना सिर्फ हम, हमारे बच्चे भी टाइप 2 डेवलप डायबिटीज़ कर रहे हैं. द मेन रीज़न इज सिंगल एंड दैट इज़ वेट गेन. अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें. आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज द बेस्ट हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग इन मोस्ट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स? दोज आर इन फेवर ऑफ GLP-1 एनालॉग. आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज. इंडिविजुअलाइजेशन इज द की, तो हम हर पेशेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 मेटफॉर्मिन. वेरी गुड. कोई और? दोज आर इन फेवर ऑफ GLP-1 एनालॉग. इट हैज़ टू बी मेटफॉर्मिन. So sir is on in the favor of GLP-1 analog. Okay जी, कोई और? None of these. ठीक है, नहीं इसी में से सिलेक्ट करना है ना. वो मुझे पता है आप लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, बट वी हैव टू सिलेक्ट वन फ्रॉम these. What about इंसुलिन? बड़ी तारीफ सुनी थी. Not at all. Good. कोई और? Okay, the actual answer is, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, the actual answer is A and E, GLP-1 analogs and SGLT2 inhibitors. Why so? Why not metformin? जस्ट अ क्वेश्चन. हम पिछले 5 मिनट से मैं यहाँ डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन पे लेक्चर देने आया हूँ, एंड फॉर लास्ट 5 and 6 or 7 minutes आई एम डिस्कसिंग अ सिंगल थिंग, एंड दैट इज obesity, because we know that obesity is the pathophysiology behind type 2 diabetes. How many of these drugs actually cause weight loss? जी, so SGLT2 inhibitor causes weight loss and GLP-1 analog causes weight loss. It's as simple as that. So you are actually, अच्छा इसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताऊं, गौर से सुनिएगा. जो थोड़ा सा 15 या 20 साल पहले से ट्रेंड लोग हैं,
दे आर स्टिल इन द फेवर ऑफ वन सिंगल थिंग. जो भी पेशेंट आता है उस पेशेंट को दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ इंसुलिन है. दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ इंसुलिन है. इंसुलिन एक्चुअली causes weight gain. You are treating diabetes which was caused by weight gain with a drug which causes weight gain. So insulin is our escape route. इंसुलिन हमारी दवाई नहीं है फेवरेट, बिल्कुल आखिरी हल है. जब हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, then insulin, this is not me talking. This is American Diabetic Association is talking and Pakistan Endocrine Society is talking. सारी गाइडलाइन अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या कोई कैसे कह रहा है, बट सब गाइडलाइंस के अंदर if we are talking about the first liners, if your weight loss is your target, which is a target in 80 to 90% of our type 2 diabetes patients, your first liner should be, sir ने कहा GLP-1 analog, actually the actual answer is GLP-1 analog, because the weight loss potential of GLP-1 analog is very good, sir. Sir. Mm-hmm. To lose weight, but they have been tested only in specific populations. So the evidence is only in favor of those specific situations. Yes, People exactly. with increased atherosclerotic cardiovascular disease and people with renal disease or heart failure. Oh, okay, sir. And specific age group, specific people. Not, you can't make a generalization. No, The I'm not GLP-1 making analog, generalization. You Whatever I described said, a generic patient most- and asking which is the best. Okay, so this is 2023 American Diabetic Association guidelines. I think We can have all question the and answer session. guidelines today are putting GLP-1 Yes. number one. Exactly. But in Pakistan, obviously being realistic, it's the price constraint. But if that is taken off, then there is no doubt you have to start with GLP-1. In fact, in type 2 diabetes, I think in the next 10 to 15 years, insulin will disappear. Definitely, that's actually the और दूसरा, I agree with you as SGLT2 because they are very potent drugs, and as a to start with, now they can be considered as a first-line drug along with GLP, if you want. That combination probably, but again, in Pakistan, the main issue is affordability. How many people can afford GLP? definitely. So Acha, if I may interesting. dare to disagree with the chair, sir, no, the guidelines, the most robust document available so far is the consensus statement of ADA and EASD that says lifestyle changes and metformin, and then you don't have to take metformin to the maximum. You don't have to achieve a certain A1C. Anytime, if patient is fall in any of the high risk group, you add GLP-1 or SGLT2. Okay, sir. If somebody has high risk group, then GLP-1 or SGLT2. And if somebody has nephropathy, then first SGLT2. And if patient doesn't tolerate that, then GLP-1. Sir, may I That is add the the American Diabetic Association 2023 guidelines? So these are basically ADA 2023 guidelines. And what does they say? It's very simple. They say that if your target is weight loss, which is our target in 80% of the cases, so this one, achievement and maintenance of weight loss goals, set individualized targets. Definitely, lifestyle is very important. Lifestyle is the most important thing. But they say that they have got a separate algorithm. If your patient is obese, you have to target. And believe me, मुझे बताएं, how many of your type 2 diabetes patients are obese or overweight? कितनी percentage type 2 diabetes patient आपके पास पतले आते हैं? चलिए ये बता दें. 5%, 10%. So whatever I said that, actually I'm talking about the majority, 90% of the patients. So if your patient is obese, for God's sake, don't go for those drugs which causes weight gain. And you can go for those drugs which are weight neutral. But if you have got those drugs which can cause weight loss, definitely that would be the most important thing. So we have got certain other cases as well. जैसे सर कह रहे हैं कि CKD patient है, CVD patient. We would be discussing those patients as well. But for my talk, my first and most important and first case was obesity, because obesity is the first thing. ACVD कितने patient को होती है जब आपके पास आते हैं? Maybe 10%, 15%. CKD कितने patient को होती है? Maybe 20%. But almost 80 to 85% of our patients are obese. And AD algorithm, this is not Dr. Nadeem saying, this is AD algorithm 2023 saying that if your patient is obese, your first liner should be a drug which can cause weight loss. जैसे सर ने कहा, GLP-1 analogs are the strongest of them all. But if you cannot afford GLP-1 analogs, then you have got the cheaper alternatives, and the cheaper alternative is the SGLT2 inhibitors. So let's move forward. यहाँ तक आ गया कुछ आपको डिस्कशन?
समझ में? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ सब डिस्कस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी. व्हाट डू वी मीन बाय फिजिकल एक्टिविटी? क्या क्या आ जाता है फिजिकल एक्टिविटी में? ब्रिस्क वॉक और एक्सरसाइज और व्हाट अबाउट स्लीप? स्लीप आती है फिजिकल एक्टिविटी में? इट डेफिनेटली इज. क्या आपने देखा है कभी आपके पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब रात को मैं सो भी जाता हूँ, नींद भी आ जाती है, सुबह उठता हूँ फ्रेश नहीं होता. वाई सो? वाई सो? डीप स्लीप, rapid eye movement sleep, the only sleep which actually REM, the only sleep which actually improves your metabolic profile is rapid eye movement sleep. रात का खाना खाया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी ली या चाय पी ली, कैफीन इज देयर. मोबाइल खुला हुआ है, वहाँ पड़ा है, पता है मैसेज आने वाला है, आपका जहन वही है. यू वुड नेवर एवर फॉल इनटू रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड यू आर डिस्टर्बिंग योर सर्काडियन रिदम एज वेल. सो फिजिकल एक्टिविटी में ESD ने जो सबसे लेटेस्ट चीज़ डाली है दैट इज़ द स्लीप. एंड बिलीव मी, जब से मैंने अपने पेशेंट को स्लीप पे काउंसिल करना शुरू किया, देयर मेटाबॉलिक प्रोफाइल हैज इंक्रीज. डेफिनेटली आई डोंट हैव डेटा इज देयर फ्रॉम वेस्टर्न पॉपुलेशन. वी वुड बी डूइंग स्टडीज ऑन दिस, बट स्टिल ESD हैज गिवन अ रिकमेंडेशन, सो डेटा इज देयर. सो स्लीप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज, क्योंकि सब आपको एक्सरसाइज, डाइट, भागना, दौड़ना सब बताएंगे, बट नो वन एवर इज गोइंग टू टेल यू अबाउट sleep quality, sleep quantity and sleep timing. And ESD has actually given us all these three things, that your physical activity ring should have a sleep part in it. अच्छा, एक चीज़ बताएं. से आई एम अ मैजिशियन, मैं कोई जादूगर हूँ, ठीक है सर, मैं आपकी लाइफ के 6 साल बढ़ा सकता हूँ. 6 साल, जस्ट सपोज, कितने पैसे देंगे आप मुझे? कोई भी पैसे लेंगे आपसे. 6 साल बढ़ाएंगे? आप जैसी लाइफ हो तो 20 साल भी बढ़ाना कम होगा सर. ओके ओके, जस्ट टू बी फ्रैंक, चले हमें, अगर आपको पता चल गया कि आपकी लाइफ में 1 साल और रहता है, 6 साल और बढ़ाने वाले हैं, सो यू वुड बी गिविंग मिलियंस टू, ओके एवरीवन. दैट्स सीरियस नोट के ऊपर. ओके, आई एम गिविंग यू अ हिंट, ठीक है, एक टिप दे रहा हूँ और फ्री में दे रहा हूँ. सो दिस इज डेटा ऑफ अराउंड 3 मिलियन पीपल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ डेटा ऑफ 1000 और 2000 पीपल. 3 मिलियन लोगों का डेटा है और ये सिर्फ एक बात कर रहा है, और वो एक बात क्या है? इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर BMI फ्रॉम क्लास 2 ओबेसिटी टू नॉर्मल, you are actually increasing your life 6 years. So this is a hint. That is the reason type 2 diabetes and obesity education is very important. Is type 2 diabetes reversible? Yes. स्टडी का नाम बताएं. किस स्टडी ने प्रूव किया था कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल है? बहुत बड़ा ट्रायल था. नहीं, वो प्री डायबिटीज का था. कितना वेट लॉस किया जाए तो टाइप 2 डायरेक्ट? वेरी गुड. ओके, सो दैट डेफिनेटली डायरेक्ट ट्रायल. क्या कहता है डायरेक्ट ट्रायल? आपके पास टाइप 2 डायबिटीज़ का मोटा मरीज आ रहा है, आप 10 kg वेट लॉस करा दें, 64% ऑफ द टाइम्स देयर वुड बी डायबिटीज रिमिशन एंड अ hefty sample size in this study as well. So 15 minutes of my 35 or 40 minutes talks are revolving around a single thing, and that single thing is obesity, obesity, obesity. And we Pakistanis are treating our type 2 diabetes patient with either sulfonylureas or insulin as first liners which are causing weight gain. मेरा ख्याल इसके बाद और ज़्यादा चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो सेकंड केस, इन एडिशन टू वेट लॉस, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रूवन टू रिड्यूस द डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस? वेरी गुड, नॉर्मोग्लाइसीमिया. वी ऑफन फॉरगेट इट. मैं जब लेक्चर देने जाता हूँ तो जो ACVD, CKD और सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, वी सीरियसली ऑफन फॉरगेट दैट glucose control is the most important thing. Okay, what drugs actually cause more glucose control and what drugs cause less glucose control? इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हाँ, इसको इस तरीके से कहा जा सकता है. सॉरी. ओके, सो glycemic control, high glycemic controlling drugs and low glycemic controlling drugs. Metformin, high. SGLT2, intermediate to high. GLP-1, high. Insulin, high. DPP-4 inhibitors, moderate to low. सर सच बताएं, विच वन इज़ योर मोस्ट फेवरेट ड्रग इन योर पेशेंट? प्लीज़, आप अपनी क्लिनिक में बैठे हैं, आपके पास पेशेंट आ रहा है, पेशेंट की HbA1c 7.5 है या 8 है या 8.5 है, सबसे ज़्यादा कौन सी ड्रग लिखते हैं? उसकी जेब पे डिपेंड करते हैं. जेब पे मतलब जेब चले 30-40 रुपए की रोज़ की ड्रग अफोर्ड कर सकता है, क्या लिखते हैं? क्लिनिक का सोचे, ये ना सोचे कि मेटफॉर्मिन ठीक है, 7 था, 7 पे आप लिख सकते थे 8.5, डुअल थेरापी देनी है.
जो लिखते हैं वो बताएं. मैं जो लिखता हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं वही लिखता हूँ. Metformin and DPP-4 inhibitors. Most of us are actually still sticking to DPP-4 inhibitor. The reason behind that, DPP-4 inhibitor का पेशेंट साइड इफेक्ट के साथ नहीं आता, बट वही DPP-4 inhibitor का पेशेंट हमारे पास 8.5 के HbA1c को मैक्सिमम 7.5 के आसपास लेके आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं. अच्छा जी, ये आगे सर की बात. 3 patients of similar age with an HbA1c of 6.5 versus 6.5 versus 6.5 and similar metabolic controls. Does it warrant a similar complication rate? No. जी आप लोग, सर को तो सब पता है, सर को तो वो बातें भी पता है जो मुझे नहीं पता, जो हमको नहीं पता. सर सबसे सीनियर हैं, आप बताएं. नहीं, ये लेक्चर मैंने ही बना के दिया. ओके, सो HbA1c 3 पेशेंट है, सिमिलर मेटाबॉलिक प्रोफाइल है, सिमिलर एज है तीनों पेशेंट की, HbA1c तीनों का 6.5 है. क्या तीनों की सिमिलर कॉम्प्लिकेशंस होंगी या डिफरेंट होंगी? डिफरेंट होंगी. वाई, कैसे, क्यों? जी कोई एक प्लीज रेज योर हैंड. जी अदर कोमोर्बिडिटीज. कोमॉर्बिडिटी भी सेम है, सिमिलर मेटाबॉलिक प्रोफाइल यानी कोमॉर्बिडिटी सेम है. नहीं कोई और. ग्लूकोज एक्सकर्शन, थोड़ा सा इसको और बेहतर करें. टाइम इन रेंज, वो भी सेम है ना, सेम है. ग्लूकोज वेरिएबिलिटी, HbA1c सेम है तो SMBGs भी चले, मैं कहता हूँ कि सेम है. टाइम इन रेंज थोड़ा सा इसको बेटर. इफ अ पेशेंट इज ऑन SGLT2 inhibitor, another patient is on GLP-1 analog, and third patient is on DPP-4 inhibitors. Hypersurgery is another important factor, but what I am actually trying to tell you or discuss with you is that every drug is actually controlling your HbA1c, but every drug has got some other added benefits as well. How many of you have actually gone through the EMPA-REG study? कोई स्टूडेंट है जो मुझे इस स्टडी को पढ़ के बताए. What is this 10.5% and 12.1%? जी, EMPA-REG स्टडी एक सेंटेंस के अंदर, कोई भी स्टडी आपके सामने है, कोई बता सकता है? Okay, I will make it simplified for you. Okay, 100 patients, 50 patients on SGLT2 inhibitor, remaining 50 patients on any other drug, not SGLT2 inhibitor, not GLP-1 analog. Similar HbA1c reduction, but if 10 patients on placebo are developing, if 12 patients on placebo are developing 3-point MACE, the patients on SGLT2 inhibitor 10 patients are developing. आपको ना बड़ा ये सिंपल लग रहा होगा, 10% versus 12%. Do you believe that these are actually 2 extra lives which you are protecting by practicing evidence-based medicine? So if a patient is on any drug and his sugars are well controlled and 10 out of 100 patients are 12 out of 100 patients are developing cardiovascular death, if that same patient is on SGLT2 inhibitors, 10 patient would be developing. यानी 2 extra जिंदगियां आप बचा रहे होंगे whenever you are prescribing any drug which is causing ACVD protection. Clear? समझ में आ रहा है? So that was the answer of that question. 3 patient all have got same HbA1c 6.5, 6.5, 6.5, but one patient is developing myocardial infarction, other patient is not developing myocardial infarction. The reason behind that is that patient is on a drug which gives added benefit or added protection to myocardial infarction. Theme is evidence-based medicine, and this is evidence. A data of maybe 5 लाख लोगों का डेटा मौजूद है, और उसके बाद और भी बहुत सारी स्टडीज आई हैं which make it quite clear. If you are following evidence, you are following guidelines, you are actually protecting more lives. If you are not following evidence, आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा नॉलेज है, मे बी यू आर प्रोटेक्टिंग लाइव्स, बट मे बी यू आर प्रोटेक्टिंग, आप नहीं कर रहे. चलें केस तो सॉल्व करें ज़रा मेरे लिए. 49-year-old Mr. A presented in my consult. This is a real life case. All these cases are actually real life cases. ठीक, okay? These presented to me. गौर से पढ़िएगा इसको. 49-year-old Mr. A presented in my consult for uncontrolled sugar for last 1.5 years. He has type 2 diabetes for same interval. Currently taking metformin 1000 mg twice a day, and his HbA1c is 9.5. BMI is okay, 23. But he was admitted for non-ST elevation myocardial infarction 2 months back in cardio ward, and current EF is also okay. Which second line agent would be your first choice? E? G? B? अम्पाग्लोफ्लोजिन. जी कोई और? एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ये भी बता दो. यू कैन सिलेक्ट R4. सर कह रहे हैं B और E.
लेक्चर लगता है आपने ही बनाया सीरियसली. ओके, बी एंड ई. वाई नॉट डापाग्लिफ्लोजिन एंड अर्टोग्लिफ्लोजिन? चले, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ADA says that if your patient has developed ASCVD, your first liner would be either a GLP-1 analog or an SGLT2 inhibitor. Is it clear? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है. But in my options, 3 out of 5 are SGLT2 inhibitor. Now the question is, why not dapagliflozin and ertogliflozin? ज़्यादा स्टडी, थोड़ा इसको बेटर करें. Evidence is more with them. मोर गुड. थोड़ा इसको और अच्छा करें. टोटल जो मोर्टेलिटी है ना वो एम्पाग्लिफ्लोजिन के साथ है. बिल्कुल. हार्ट फेलियर रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन. That's the actual answer. Dapagliflozin and ertogliflozin ACVD trials have failed. So if ADA is saying to you that your SGLT2 inhibitor should be the first line, there is another line behind that, and that line is saying SGLT2 inhibitor with primary study which actually showed that 3-point MACE has showed non-inferiority or superiority. Sorry, no, not non-inferiority, superiority. इसको ना मैं सिंपल कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है. ये तो चलें आ गया. So look at that. So DECLARE was the trial of dapagliflozin. Okay, VERTIS CV was the trial of ertogliflozin, and EMPA-REG was the trial of empagliflozin. For superiority, how many of these 3 trials are actually meeting the superiority? A hazard ratio of 0.86, a hazard ratio of 0.93, and a hazard ratio of कहाँ चला गया 97. So does VERTIS CV prove that in a patient who has already developed ASCVD, ertogliflozin is giving you extra protection? क्या ये बात प्रूव हुई? No. DECLARE failed. क्या DECLARE ने ये बात प्रूव की that dapagliflozin is giving extra protection? No. Only the empagliflozin and canagliflozin are 2 SGLT2 inhibitors which provide extra protection for ASCVD in their primary trials. That is the reason there isn't a name of dapagliflozin or ertogliflozin in this chart. This is the again American Diabetic Association 2023. Effect on MACE, either the canagliflozin which is not available in Pakistan or the empagliflozin. तो वो कहते हैं ना कि आप अपनी तरफ से अच्छे ही कर रहे होंगे. आपने पढ़ा होगा ADA ने कहा है कि SGLT2 दे दो, मैंने दे दी, लेकिन बिकॉज क्योंकि यू हैव स्टडीड दोज स्टडीज तो वो आपका अच्छा करना भी हेल्पफुल नहीं होगा. So in order to practice evidence-based medicine, you have to study extensively. Then only you can practice the evidence-based medicine. That was the reason I have traveled that far from there to here, just to discuss these things with you people, so that 2 extra lives I am protecting, 2 extra lives you are protecting. Maybe at the end of these lectures, we would be protecting maybe 100 more extra lives. Is it clear up to that? Okay. What about the chronic kidney disease? Does anyone know what is the prevalence of chronic kidney disease in patients with diabetes? What is the definition of chronic kidney disease? For students only. What's the definition of chronic kidney disease? Do we have students here, postgraduate students, or I don't see undergraduates, but postgraduates must be here. CKD की definition बताए कोई? Is microalbuminuria CKD? Yes. Is a GFR of 57 CKD? Again, yes. So if your patient's GFR falls below 60, that's a CKD. Okay. If your patient has developed microalbuminuria, again, that's called as CKD. So first you have to identify the CKD, then only you can follow the guidelines, because guidelines say that if your patient has developed CKD or diabetic kidney disease, again your first liner would be, American Diabetic Association क्या कहती है, if your patient of diabetes has developed CKD, your first liner would be again SGLT2 inhibitors. So SGLT2 inhibitor if your patient has developed ASCVD, SGLT2 inhibitor if your patient has developed heart failure, SGLT2 inhibitor if your patient has developed CKD, and mortality benefit in all of them. So that was the reason here. Okay. There is definite benefit of empagliflozin in this setting, but that does not take away the advantage or benefits of metformin. I'm never against metformin. Metformin is my ideal kit, seriously. But we have got some better kits as well. आप ये समझ लें कि मेटफॉर्मिन हमारी डॉक्टर बन गई थी और जो SGLT2 इनहिबिटर थी वो CSP ऑफिसर बन गई थी, तो वो थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर हो गया ना. डू यू बिलीव दैट SGLT2 inhibitors were our kit, but then cardiologist
adopted it. Then nephrologist adopted it. CSP officers also need a doctor. Doctors don't need a CSP. No, I'm just giving an example. Okay. So problem is there. SGLT2 inhibitor, a nephrologist की drug, SGLT2 inhibitor, a cardiologist की drug, SGLT2 inhibitor, a diabetologist की drug, and the actual problem is that still we are underutilizing that drug. Still our first liners are either DPP4 inhibitors or insulin or the SGLT2 inhibitors. Okay, another case. 57-year-old Mr. B presented in my consult for uncontrolled sugar for last 4 years. He has type 2 diabetes for last 15 years and currently taking 1000 mg metformin twice a day and gliclazide MR 60 mg once a day, and his HbA1c is uncontrolled. His eGFR is 55 ml per minute and his urine show no albuminuria. Which second line agent you are going to add? B, empagliflozin, and B and C. Why so? Dapagliflozin has got its own dedicated trial. So it's a bit complicated. ACVD, SGLT2 inhibitor, class effect है, but dapagliflozin or gliflozin failed. CKD, dapagliflozin का trial है, dapa-CKD, dapa-kidney, empagliflozin का trial है, empa-kidney. It's as simple as that. So your patient have got a GFR of maybe 55 or 57. Again, American Diabetic Association guidelines are quite clear. You have to start an SGLT2 inhibitor, not the metformin or any other drug in these type of the patients. So these are the Pakistan Endocrine Society guideline. I am a co-author of those guidelines. So most of the references in my presentation are either from American Diabetic Association guideline or Pakistan Endocrine Society guidelines. Okay, एक question आप लोगों से, because you all practice diabetes now. If a patient who is diabetic but not hypertensive and that patient has developed microalbuminuria, are you going to start ARB or ACE in these patients? Yes, definitely. Yes, okay. तो इसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है because everyone is already clear. ड्रग डोजेज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. एक और इम्पॉर्टेंट केस है, बिकॉज केस डिस्कस कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम. Another case, 49-year-old Mr. C presented in my consult for increasing shortness of breath and pedal edema. He is diabetic since last 3 years. Metformin HbA1c is well controlled. BNP was ordered. It was 1125. Ejection fraction 35%. In addition to referring the patient to a cardiologist, what change you are planning in this diabetic management? Adding an SGLT2 inhibitor, substituting metformin to a GLP-1 analog, substituting metformin to an insulin, or substituting metformin to an SGLT2 inhibitor. G. Those are in favor of A, please raise your hands. A, B, C, D. Definitely D. Why D? Because HbA1c is already under control. So we are not actually planning hypoglycemia in this patient. We are just planning a one thing, and that plan is to follow the 2021 European Society of Cardiology guidelines. The Fantastic Four. क्या है ये Fantastic Four? One way or the other way, you have to add all these four in a patient with heart failure with reduced ejection fraction. Either an ACE inhibitor or an ARNI, beta blocker, MRA, and an SGLT2 inhibitor. If your patient is not diabetic, still SGLT2 inhibitor have shown benefit in these patients, and these 2021 ESC guidelines clearly mention that if your patient is not diabetic, still an SGLT2 inhibitor is equal to an MRA and a beta blocker and an ACE inhibitor or ARNI in mortality protection from these patients. So a $1 million question. We would be having a big hand of applause for that guy or that lady who solved this problem. How an oral hypoglycemic drug can affect heart in non-diabetic individuals? एक दवाई जिसका काम था शुगर की रीअब्जॉर्प्शन को रोकना, एंड नाउ दैट दवाई इज एक्चुअली वर्किंग फॉर मोर्टेलिटी रिडक्शन इन हार्ट फेलियर पेशेंट इन नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल्स. नहीं, SGLT तो है. हाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? सर से नहीं पूछूंगा, सर ने ऑलरेडी थोड़ा बता दिया था. कोई और? सो मैनी मैकेनिज्म, बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज most common or most important or most hypothesized mechanism is the cellular mechanism. Cellular mechanism क्या कहता है? SGLT2 inhibitors are actually, did we got 20-30 minutes? 30 हो गए. Okay, 10 मिनट हैं. I've got just one case. Okay, so I was said that around 1 hour. Okay. No. Okay, sir. But I have got last case.
So there is a cellular mechanism, and the cellular mechanism says that actually whenever a patient is developing heart failure, so there is hyperactivity of certain channels, and those channels are called as sodium hydrogen exchangers, and that produces reactive oxygen species which cause propagation of heart failure. And this SGLT2 inhibitor is actually targeting that cellular mechanism. So that was the $1 million question. किसी ने जवाब नहीं दिया, so no hand of applause. So this one is the last case. I am a bit fast because time कम दिया गया है और मेरी presentation 1 hour की थी, तो ये reason है. तो मैं कुछ cases को skip ज़रूर कर रहा हूँ, but वो cases already sir discuss कर चुके हैं. For example, a case of neuropathy. So this one is the last one. 49-year-old Mr. D presented in my consult for routine checkup. He is diabetic and hypertensive for last 9 years. His BP always remained higher than normal. Sugars are controlled. He uses telmisartan and thiazide. So this one is also my patient. On systemic inquiry, he gives history of chest pain on exertion. BNP, echo and ETT was advised. BNP is 1146, echo 55%, and ETT is normal. What is the diagnosis? Heart failure with? Exactly. So heart failure with preserved ejection fraction. आज से 6 महीने पहले या सॉरी एक जी सॉरी सर बट ETT is normal. Maybe ETT exercise tolerance test is normal. Definitely it doesn't exclude. So for example मैं थोड़ा इसको modify कर देता हूँ. Angiography is also normal. थोड़ा modify कर देते हैं, ठीक है, because that patient got angiography done. Because मेरा patient है ना, and that angiography was also normal. So this is a typical case of heart failure with preserved ejection fraction. How many drugs have shown mortality benefit in heart failure with preserved ejection fraction? Do we have cardiologist here? सर आप है ना, आप मुझे बताएं कि 1.5 साल पहले या 2 साल पहले हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में मॉर्टेलिटी बेनिफिट के लिए आप कोई ड्रग दिया करते थे? बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस्प्रिन, योर एवरी हीरो फेल्ड. जो भी ड्रग्स हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए दी गई फॉर मॉर्टिलिटी बेनिफिट, इनके सारे हीरो फेल हुए थे इस डेमन को बीट करने में. एस इनहिबिटर फेल्ड, बीटा ब्लॉकर फेल्ड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फेल्ड, एस्प्रिन फेल्ड, स्टेटिन फेल्ड. तो आज से 1.5 साल पहले तक हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ये सारी स्टडीज़ के नाम लिखे हुए हैं जो फेल हुई थी. तो जब इनके सारे हीरो फेल हुए, देन कम्स आर हीरो. उसके बाद फिर हमारा हीरो आया, एंड दैट आर हीरो हैज़ शोन a mortality benefit of around 21% in heart failure with preserved ejection fraction. That is the reason now cardiologists are actually adopting our hero. उन्होंने कहा कि ये हमें दे दें, and we have given them that hero, and the name of that hero is SGLT2 inhibitor, empagliflozin or dapagliflozin. DAPA की स्टडी भी आ गई है. dapagliflozin have also shown mortality benefit of around 18 to 23% in heart failure with preserved ejection fraction. And empagliflozin has shown even more benefit, 21 to 27%. अब मुझे एक बात बताएं, does these numbers actually count? 27% mortality reduction का मतलब क्या है? 27% mortality reduction क्या मतलब है? ठीक है, बड़ा सिंपल, हमारी सिंपल जबान में बताएं. 100 की वजह से 73 मरेंगे. 27 बंदे बचा लिए आपने, क्या करके? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को प्रैक्टिस करके. एंड दैट इज रीजन आई एम वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, एंड आई एम थैंकफुल टू Martin Dow people that they have invited me, and the basic theme of this conference was, if I am not wrong, evidence based medicine. 100 में से 27 बंदे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को प्रैक्टिस करके आप लोग बचा सकते हैं. They say that if you are educating one patient, you are protecting one life. If you are educating one healthcare professional, you are protecting 1,000 life. And I guess you are maybe 80, 90. So we actually protected 80, 90,000 life. Thank you guys. I guess I completed in half an hour. Okay. ज़्यादा हो गया? Thank you.